Heroes are people who change the world, but they aren't always who you expect. Sometimes they are the local policewoman, a simple toy maker, fading into oblivion but carrying ancient traditions forward through painstaking years of toil, and then rewarded with a place in the record books. A young girl of an illiterate, financially deprived background who gets admission into the top technical school just because she dared to dream. Just ordinary people who believe in a better world. People who found a passion for something. Aspirational India is a celebration of just a few of them as we present their inspirational stories from across the country. So join me on my journey. Hello and welcome. I'm Rukma with you. Until a year ago, 18-year-old Himanshi dreamed of becoming a physics teacher. But her family's financial situation pushed her in a different direction, computer science engineering. And perhaps all for the best, because she has secured admission into the Indian Institute of Technology. Surprising and all the more remarkable because both her parents are daily wage construction workers. Here's her story. Becoming a teacher of physics was her dream, till she realized the road was too long and she could not afford it. Himanshi's priority was to complete studying quickly and get a well-paid job to support her family. She then learned of the 4-year engineering degree and that IITs are very prestigious places to study. The 18-year-old had completed class 12 from a Delhi government school and begun looking up entrance exams she could prepare for. She completed school at a particularly difficult time for her family during the lockdown in 2020, when she had to join the line outside her school sometimes to receive meals distributed by the government. पहले मतलब ऐसा कभी मतलब बहुत पहले तो पता ही नहीं था ना कि IIT होता है क्या है, फिर उसके बारे में 12th के बाद ही पता चला, फिर भी बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आई, बट फाइनली हो गया तो खुशी हो रही है काफी. Now she is on the way to becoming a world-class engineer in the premier, the Indian Institute of Technology. Both her parents are daily wage construction workers, with her father earning 400 rupees a day and her mother 300 rupees. तो इनको जैसे तैसे जो हमारी उसमें समझ में आया मजदूरी कर करके पढ़ा रहा हूँ और ये सोच रहा था बच्चे ना आदमी यूँ कह रहे थे कि लोग बच्चे ना तुम्हारे, तो ये हम कह रहे थे हमारी लड़की हैं 3, तो लड़की मेरी कह रही थी कि हम लड़का बन के बताएंगे आपको लड़का बन के दिखाएंगे, और बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं. जितना मैं कमाता हूँ अपनी मैं मजदूरी करता हूँ, जितनी मेरी बजट है वो लगा के पढ़ा रहा हूँ. विश्वास था मेरी बेटी जो करेगी अच्छा करेगी. जब 10वीं पास करी ना 90% नंबर आए, फिर ये बोली मम्मी मैं साइंस ले लूँ. मैं कहा बेटा मुझे तो पता नहीं. फिर बोली पूछ लो मम्मी किसी से. फिर बोली मैं ले लेती हूँ, जो होएगा देखी जाएगी. फिर लेके रात दिन बेचारा पढ़ाई करी बेचारी ने, और आज उसका हौसला कामयाब हो गया. Private coaching for Himanshi was never an option, but an uncle from a village in Uttar Pradesh's Mahoba district told her about a free residential coaching program offered by an NGO. Teaching herself initially through YouTube, Himanshi got into the program and learnt more from everywhere as days went on, and she kept her ears and eyes open. ये संस्था का जो मेन उद्देश्य था, जो एम था, वो यही था कि जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उन तक हम पहुंच सकें और उनको वो सक्सेस दिला सकें जिसके लिए वो हकदार हैं. इससे 2 चीज़ें तय हो जाती हैं. हमारे सोसाइटी में जो एक बड़ा सा गैप है, ब्रेड एंड बटर का गैप बोलते हैं हम उसे, जिसमें 80% लोग ब्रेड के लिए दौड़ते हैं और 20% बटर के लिए. ये गैप कभी भी कम नहीं हो सकता किसी कैटेगरी डिवीज़न या रिजर्वेशन से. ये सिर्फ एजुकेशन से होता है. एजुकेशन से एक एक्सपोजर मिलता है इन बच्चों को, तो सिर्फ ये पैसों में या जॉब करके आगे नहीं बढ़ते, इनकी सोच बदल जाती है. रहने का तरीका, बात करने का तरीका, किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, ज़रूरतों को समझते हैं, ये सब बदलता है. A source of joy to her family, Himanshi is an inspiration for all. How many of us give up halfway because of the hitches on the way to our goals, or get upset and abusive because we feel we have been deprived of what should have been our right?
or become bitter as we failed and blamed it, or not having parents who were rich enough, or not being given opportunities instead of pursuing whatever we thought was right, and learning and transforming ourselves as we went along with living life. More than 30 women are associated with the Kalashri Foundation, earning their livelihood by making handmade dolls so the world can know the art and culture of India within the country and beyond. A glimpse of India from north to south and east to west. Take a look. Adorned with colorful threads and natural colors, this handmade doll can make any child smile. Even in these days when plastic toys are all the rage, the dream of Prime Minister's Make in India and Self-Reliant India is being realized by the Kalashri Foundation of Gandhinagar and its many women members. In the era of machine-made dolls, Ranjan Ben and her team have been doing hand doll making for more than 60 years. This organization was recently awarded a place in the World Book of Records for making more than 1 lakh handmade dolls, as well as one in the Guinness Book of World Records last year. The goal behind making these handmade beauties is to bring the diverse culture and art of India to the people. They are not just dolls, therefore, but unmatched specimens of Indian art, as also very healthy toys for children. बहुत धीरे धीरे इस काम की शुरुआत हुई, फिर महिलाएं जुड़ती चली गईं। रोज कुछ नया बनाते हैं, उससे मेरी ऊर्जा भी बनी रहती है और संतोष होता है कि कुछ अच्छा बना रहे हैं। बच्चों को अच्छे और स्वस्थ खिलौने देने में हम सफल हो रहे हैं और इन गुड़ियाओं की वजह से हम महिलाओं की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आया है। More than 30 women are associated with Kalashri Foundation, earning their livelihood by these handmade dolls so the world can know the art and culture of India within our borders and abroad. A glimpse of India from north to south and east to west, eco-friendly as well as tools to woo everyone, from children to the elderly. हम विदेशों में बनी प्लास्टिक की गुड़ियाएं खिलौने कितना पसंद करते हैं, वर्षों से उन्हें ही खरीदते रहे हैं। हम चाहते थे कि भारत के खिलौने भारतीय हाथों के द्वारा बने और हमारे बच्चे उनसे खेलें। हम वही कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि लोगों को खिलौने बहुत पसंद आ रहे हैं। Even at the age of 78, Ranjan Ben of Gandhinagar, who makes dolls with great enthusiasm, energizing everyone with her passion, not only fulfills the dream of Make in India with her hands, she inspires others, helping women become self-reliant. Suman Borana's report with Lakshman Rajput from Gandhinagar. It's now time for a short break, but there's more up ahead, so stay tuned. We'll be right back. The changing world of news. Headlines that you wake up to. News that shapes your day. Stories that matter to you. The latest and most accurate updates. A fresh start to a new day. The Breakfast News, Monday to Friday, 8 a.m. on DD India. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now.
It's a scheme sponsored by the Jaipur Khadi and Village Industries Commission in Rajasthan. This natural paint from cow dung is gaining buyers across the entire country. The commission is preparing to set up 18 units now. More than 15 lakh litres of this paint have been sold. What is this entire project all about? We tell you more in our next report. This is natural paint and it's made from, would you believe it, cow dung. A scheme sponsored by the Jaipur Khadi and Village Industries Commission of Rajasthan, this natural paint from cow dung is gaining buyers across the entire country. The commission is preparing to set up 18 units across India. More than 15 lakh litres of this paint have already been sold. Made from cow dung with non-harmful chemicals and used on all types of surfaces, including wood, inside homes and in buildings too. कुमारपा राष्ट्रीय हाथकरघा संस्थान जो सांगानेर में है, वहाँ पे इसका रिसर्च हुआ है और इस पेंट का नाम दिया प्राकृतिक पेंट। 18 लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ले चुके हैं और जिसमें 2 राजस्थान के भी हैं, उन्होंने भी अपना यूनिट सेटअप कर रहे हैं। और फर्स्ट यूनिट हमारी पूना में शुरू हो चुकी है। वो अपना प्राकृतिक पेंट जो गोबर से बन रहा है वो बनाना शुरू कर चुके हैं। गाय के गोबर से पेंट बन रहा है तो इसको रोज़गार, ग्रामीण क्षेत्र में एक रोज़गार का रूप में मुहैया कराएंगे, क्योंकि किसानों से हम या गाय पालने वालों से हम गोबर खरीदेंगे तो उनकी आय बढ़ेगी। आप रेडी टू शिफ्ट हम कह सकते हैं कि कलर करते ही आप इस मकान में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें बनाते टाइम या कलर करते टाइम कोई किसी तरह की स्मेल नहीं है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। Presently, this paint is being manufactured by the Kumarappa Khadi Plaza in Rajasthan. Here, training to make this natural paint and to set up a unit is also being imparted. The paint is prepared by going through various processes. जितना गोबर है उसमें उतना ही पानी ऐड करते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन को आपस में अच्छे से मिक्स करने के बाद ये रिफाइनर मशीन में आता है। रिफाइनर मशीन का मतलब है कि इसमें हम बहुत अच्छे से इसे फाइन बारीक पीसा जाएगा। फाइन पीसने के बाद जो होगा ये हमारा ब्लीचिंग टैंक है। इसमें ब्लीचिंग टैंक में हम एपीपी प्रोसेस से इसे सीएमसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम गोबर को अगर पेंट ब्रश से लगाएंगे तो कहीं ज़्यादा लगेगा, कहीं कम लगेगा। सीएमसी में कन्वर्ट होने के बाद ये बिल्कुल इवनली लगेगा, यानी कि एज ए गोबर का रॉ मटेरियल तैयार हो गया सीएमसी, जो सारी पेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए काम में आएगा। जो सीएमसी तैयार हुआ उसका हम जो उपयोग करेंगे, इस वाली जो हमारी हाई डिस्पर्सर मशीन है इसके अंदर पेंट बनाएंगे। इसमें 2 तरह के पेंट बनाते हैं, एक डिस्टेम्बर पेंट जिसमें हम 30% गाय के गोबर का उपयोग करते हैं, एक इमल्शन पेंट जिसमें हम 20% गाय के गोबर का उपयोग करते हैं। While the paint itself is in great demand in the market, its impact is manifold, protecting the environment. Moreover, emerging as a new source of employment, especially for the rural unemployed. With Bureau Inputs, DD India. We now slip into a very short break, but there's more up ahead, so stay tuned. We'll be back with more inspirational stories. नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, मुंग हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। Your window
to Rising India, India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD India. Financial constraints were always an obstacle as she lived in a remote village in an Adivasi community. Renu somehow studied till graduation. The daughter of a fishmonger, in 2013 she decided to become self-sufficient after passing her BA, as pursuing higher education was impossible. She had to leave her studies and therefore opened a training center. After getting training in sewing and embroidery herself, today she not only earns her own living and is self-reliant, but is teaching others to do the same. In a small rented shop of 10 by 10, Renu earns her livelihood by sewing and embroidery. A simple rural girl who has perhaps never left her village, which is a remote Adivasi one, Renu earns a good income herself, even while training and enabling many others to set out on a new path in life. She is a fish seller's daughter and once dreamt of becoming a teacher. But financial constraints were an obstacle. Renu somehow studied till graduation, and in 2013 she decided to become self-sufficient after she had to leave her studies and opened a training center, after acquiring training in sewing and embroidery herself. वैसे तो मुझे टीचर बनने का बहुत शौक था और मैं टीचर नहीं बन पाई तो क्या हुआ सर, मगर मुझे गर्व है कि मैं सिलाई करके बहुत सारी लड़कियों को सिलाई कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ जो भी सिलाई सीख चुकी हैं वो और आगे बढ़ें और बहुत कुछ करें सर. Today Renu is not only engaged herself in her small rented shop, she is also training many girls in the area. Nearly 400 to 500 women are earning their livelihood thanks to her. In her training center, which she has named Renu Training Center, Renu herself has been given opportunities to work as a trainer by the local unit of the NTPC. This also was a great financial boost. सिलाई का काम 2013 से हम स्टार्ट किए हैं, जो कि अभी तक कम से कम 400 से 450-500 लोगों को सिखा चुके हैं, जिसमें से महिलाएं भी हैं और लड़कियां भी हैं, जो कि वो अपने घर मतलब सिलाई मेरे से सिलाई सीख के अपने घर में खुद भी अपना सिलाई करती हैं
खुद 2 पैसे इनकम हो जाते हैं उनको भी। Renu is a source of inspiration for the women of her village. They look up to her with respect as the one who trained all of them. And today, with the help of that training, they too are standing on their own feet and earning their livelihood. ये लड़की इतनी होनहार थी सर कि खुद से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद ये 600-700 महिलाओं को यहाँ सिलाई सिखाई सर। और जो 600-700 महिलाएं सिलाई सीखी हैं खुद अपने पैर पर खड़े होकर 200-400 का रोज आमदनी कर रही हैं सर। इनके माध्यम से हमें भी बहुत सारे सीख मिले और हम अपने क्षेत्र में लड़कियों को सिलाई भी सिखाते हैं सर। यहाँ से सीख के बहुत लोग जो गई वो अपने खुद से सिलाई करके कमाती भी हैं। रेनू एक सिलाई सेंटर खोली थी जिसमें सिलाई लोगों को सिखाए, ठीक, और बहुत लोगों को सिलाई सिखा कर रोजगार दी। कुछ लोग अपने घर में मशीन ला के काम किए, कुछ लोग दुकान पर जाकर दुकान खोले जिससे उनका आमदनी बढ़ा है और अपने घर का खर्च भी चलाते हैं। Renu's father regrets she could not go in for higher education due to financial constraints, but he is proud of his daughter for having paved her own path. पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका है, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई करके सिलाई सीखी है और सब लोग को सिखा रही है। ये गर्व है कि हमारी लड़की जो है सब लोग को सिखा रही है। यहाँ पे ये समाज में बेटी बेटा कहते हैं कि बेटी हमारी बहुत अच्छी काम कर रही है। Beechpur is a tribal dominated area with almost no avenue for higher education. Renu could not become a teacher, but today she is self-reliant. And her life itself is a lesson for many. Talk about guts and a never say die attitude. Undoubtedly, Renu has set an example for all those women who want to stand on their own feet and lead lives of self-reliance. Sunil Tiwari's report from Sonbhadra, DD India. Well, that's all we have for you in this edition of Aspirational India. We hope you enjoyed our show. We'll be back again next week with more stories of hope, courage and strong determination to succeed and emerge victorious. Till then, goodbye and take care.